Hello, hello. Yes, sir. Okay. So we started with class and objects. Well, we saw what is class, what is object. Class is a blueprint, yes, and objects are instance of classes. Uh, we saw that we were saying that class is a something logical, right? And object is physical. Uh, we took one example also, a class of student, right? So in the class, I just defined the properties of student, name, roll number, marks, etc., etc., and just I'm creating the variable of type student. Yes, we call class as a user defined data type. जैसे हमारे पास int, float, char है, we can store integer in int variable, character in char variable. I can store yes student variable. I can store student data inside that variable. Okay. So let's go ahead. So in class there are two things. One is data members, and other is yes member functions. So if I create object of a particular class, it will have two things. One is data members, and other is yes member functions. हमने कल देखा था two important features of OOPS, that is one is data binding and second is data hiding. Data binding is we are just data members are nothing but just a data variables. Let's say if I have a class, yes, whatever my class, मैं class का name दे देता हूँ my class. Okay, if it has a variables inside it, declared inside, तो वो उसको बोलता है data members. Yes, int x, int y, yes, int y. So these are data members. अभी इसके आगे हम लोग access specifier यूज करते हैं. We'll come to that point soon. But अभी के लिए इतना समझो कि class is a blueprint and उसका हम लोग objects create कर रहे हैं. Objects के अंदर data members होते हैं and member function होता है. Okay, member function associated with this data members. Okay, and we can make that privacy that only member function would able to access this data members, and उसे हम लोग data hiding का concept बोलते हैं. And for that I will set this data to private. Okay, we'll understand that with example. So first thing in OOPS is method overloading. First we'll take an example. Okay, let me just. Okay, so today I'll be explaining with examples. So writing a code for each and everything is time consuming. Okay, so this is an example. Yes, my class is just a class in which public, it is an access specifier. What does it mean is whatever written, see class के अंदर जैसे मोनोला, there are two things. One is data members and member function. Here there is no data member for now. There is no, I don't, and कोई variable declare नहीं किया. I didn't declare any variable here. Here it is a member function. Yes. So this is called inline function, or you also call it as inside function. Yes, the function का definition you might, yes, you know, right? कल ही हमने देखा था definition किसको बोलते हैं, declaration किसको बोलते हैं, yes, and function call किसको बोलते हैं. So this is the definition of function. Yes, member function of this class
yes. तो I am defining the function inside the class, तो उसे inside function बोलते हैं. And if I am just declaring the function inside class and defining it outside, yes, कि class के curly brackets के बाहर define कर रहा हूँ, yes, तो उसे outside function बोलते हैं. तो there are two ways to write the member function of a class. One is inside and second is outside. But to write the definition of function outside, you have to declare it here. Yes. So what is this? I am creating an object of my class. जैसे हम लोग वेरिएबल कल स्टूडेंट का कर रहे थे. Yes, we are creating the variable of student. Similarly, I am creating just a variable of this my class, जिसका टाइप क्या? My class. Yes. तो now I am accessing. Just मैंने कल बताया था, dot operator is used to access data members, right? So this is how I am accessing my member functions. Yes, I can access member function as well as data member using dot operator. So this is what I'm creating object of my class, and here I am accessing inside function. Yes, function defined inside my class, and here I am accessing function defined outside my class. There is no difference in this function called accessing. Access करने में कुछ नहीं है, just object name dot and function call, that's it. यहाँ पे कुछ difference नहीं है, just this. You have to remember this. This is called scope resolution operator. So if you are defining your function outside your class, what will be the syntax is return type of function. Note it well. Return type of function, जो भी क्लास का वो फंक्शन है, दैट इज माय क्लास से बिलोंग करता है ये फंक्शन. यस, इट्स अ मेंबर फंक्शन ऑफ माय क्लास. रिटर्न टाइप, यस, जो भी क्लास से बिलोंग करता है. देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड दिस इज फंक्शन. यू शुड नो दिस सिंटैक्स. वो लोग एग्जाम में यही पूछेंगे. They will ask question based on this, what is inside function, what is outside function. So board exams में सबसे best way यही होता है, you keep one example with you, yes, and just explain that example properly. Explain like this, what is the use things first. Yes, I am just using the things first. I'm just giving an example of inside function. Yes, example of outside function. Just first write this code if you want, then explain what is inside function. Since the this function is defined inside the class, so it is called inside function. Yes, this function is defined outside the class. Yes, and syntax to define function outside the class is return type, then class name, then scope resolution operator, then function name. So this is how you can frame your answer for question based on this. Yes, inside and outside, yes, member functions. Any doubt, anyone? इसमें कुछ doubt है? If not, we will go for the next topic, that is method overloading. Yes, no, Hana? Yes, sir. Okay. Okay, so we'll go for method overloading. The next topic is method overloading. अच्छा, ये रन नहीं किया ना हमने, रन कर लेते हैं.
Okay, so what you do is yes, it is calling function inside the class and function outside the class. पहले तो भी function inside वाला function call कर रहा है outside. This printf is printing is not important. Important is कि आप समझो कि what is inside and what is outside. That is important here. Second is function overloading. Yes. हमने कल ही देखा था एक एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. आज वापस देख लेते हैं. सी फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स हाउ कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए दैट आई विल टेल यू. तो आई कैन ओवरलोड अ फंक्शन यूजिंग सेम फंक्शन नेम, सेम रिटर्न टाइप. यस, सेम फंक्शन नेम, सेम रिटर्न टाइप, different argument type, different number of arguments. See, यहाँ पे I'm first of all मेरा फंक्शन है void function int. ये डिक्लेयर किया है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है. एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे है. यस, कल मैंने बोला था कि इफ यू आर डिफाइनिंग मतलब डेफिनेशन मेन फंक्शन के नीचे लिखते हो तो यू हैव टू डिक्लेयर योर फंक्शन अबव मेन फंक्शन. ये किया था हमने. यस, now ये void function int, it's taking one integer variable. Yes, this second, see this is overloading. क्यों? See, overloading में फर्स्ट चीज ये है कि रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं फंक्शन के अंदर उसका टाइप डिफरेंट होना चाहिए. इफ इट इज अ सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट उसका टाइप डिफरेंट होना चाहिए. यस, आई एम टेकिंग वन आर्ग्यूमेंट ओनली इन दिस सेकंड केस, उसका टाइप अलग है. यस, एंड थर्ड, इफ फर्स्ट वाले का टाइप सेम है दैट इज इंट, तो माय नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड नॉट मैच. यस, देयर आर see this first passing one argument that is int, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? this one. Second case, we are passing float variable inside this function. Yes, passing one argument that is float, so this is overloaded by type. Yes, this overloading is due to type of argument which we are passing. Next, what is this? This is function is passing, we are passing two, we are see मैंने क्या बोला, overloading either type से होगा वरना number of arguments से होगा. Yes, this is overloading due to number of arguments. Yes, we are passing two arguments and it will call this function. Definition जो भी है ये है definition, just we are printing, nothing else. I want to just serve the concept of overloading. What exactly overloading? What are the constraints? Yes, return type same होना चाहिए, function name same होना चाहिए. Understood? Yes, sir. Yes, it is printing. If you want to take a screenshot or example something, you can. Otherwise, we'll move on. किसी को कुछ डाउट है इसमें? मेथड और कुछ दूसरा चीज होगा नहीं समझा होगा, कोई एग्जांपल होगा नहीं समझा होगा. यस, अगेन इसमें भी सेम चीज जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया, यू क्रिएट योर ओन एग्जांपल. एक स्टैंडर्ड एग्जांपल रखो एंड मेथड ओवरलोडिंग मतलब जो भी क्वेश्चन आता है मेथड ओवरलोडिंग पे, लाइक व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स. यस, give example and explain method overloading. So just you be ready with one example जिसमें सब फीचर्स मेथड ओवरलोडिंग का, सब टाइप्स मेथड ओवरलोडिंग का कवर होना चाहिए.
You be ready with the one example. एक ही example करो, but उसमें सब features समझ लो. Yes, what is class, what is object, उसके लिए एक ही example करो, and उसके लिए सब features समझ लो. कि उसमें inheritance क्या होता है. अच्छा, ये होगा तो इसको inherit like that. Yes. I think no one is having doubt in function overloading, so we'll move ahead. Next is constructor. Can anyone tell me what is constructor? कुछ पता है आपको? What is constructor? It is used to create objects. It is used to create object. Yes. और क्या यूज है constructors का? Initialize करने के लिए. Yes. Data members को initialize करना है तो we use constructor. Okay. तो पहले तो आपको थोड़ा थियरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टर पे, तो कंस्ट्रक्टर इन C++ लिखने का मतलब वर्डिंग्स आपका खुद का बनाओ. दिस इज माय वर्डिंग्स. ओके, अ कंस्ट्रक्टर इन C++ स्पेशल मेथड, यस, दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड. जब भी ऑब्जेक्ट कॉल होता है, जब भी क्रिएट करते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. यस, द कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज द क्लास नेम. फर्स्ट रूल, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड डजंट एंड रिटर्न टाइप. यस, वेरी गुड तेज. कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है. यस, स्टूडेंट इज अ कंस्ट्रक्टर. या उसको कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है. एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक फंक्शन. यस, फंक्शन मेंबर के जैसे दिखता है, बट उसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता. एंड उसका नेम ऑफ फंक्शन और नेम ऑफ सॉरी दिस नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज नेम ऑफ क्लास. सो दिस इज अ बेसिक 2 रूल्स. यस, कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं कर, मतलब रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसका नेम इज सेम एज क्लास नेम. यस, कभी यूज करता है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द वैल्यूज. इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करता है कंस्ट्रक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम. यस, सो फर्स्ट विल स्टडी व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सी, यहाँ पे मेरा क्लास क्या है? स्टूडेंट. लेट्स कम टू दिस टॉपिक, लाइक एक्सेस स्पेसिफायर. तो इफ my access specifier is set to private, so only methods belong to this student class can access my this variable data member. And if see, यहाँ पे मेरा नेम है, उसे प्राइवेट सेट किया है, तो only I can access through a method defined inside my class. And if मेरा डेटा पब्लिक है, सी ये सब पब्लिक है, तो I can access using object name. एक यहाँ पे एग्जांपल देख लो. सी, S4 is an object. Yes, so if I want to access this what is that name? Yes, I want to access name, so I can only access through this method, that is get name. वहां पे ये प्रिंट कर रहा है, राइट? I can only access through this method. So I am using this. I can't write directly, जैसे मैं बाकी सब चीज के लिए लिख रहा हूँ, like S2.standard या S4.standard, yes, S2.division, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कॉल यूज कर रहा हूँ. पब्लिक डेटा मेंबर्स को मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस कर रहा हूँ, बट आई कांट एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम. इट कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग member function. Yes, because that's why if I want to print name,
I will be calling the function using an object name. And so this is the rule that private data members can only be accessed using methods, the member functions. Okay, let's study default constructor. So default constructor क्या होता है? Whenever the object is created, constructor is called. अभी depend करता है कैसे मैंने object को define किया है. This is the first example. Here I am creating student object, that is S1. I am creating object S1 of type student. Yes. तो see, यहाँ में मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, like I am doing here. यहाँ में मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. यस, दिस जैसे क्यों यहाँ पे स्कूल नेम, एक एग्जांपल के साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझिएगा कि सपोज आई एम क्रिएटिंग सम प्रोग्राम टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम स्कूल. तो उनका स्कूल नेम, राइट, स्कूल नेम सेम ही रहने वाला है, हर एक बच्चे का स्कूल नेम सेम ही होने वाला है. तो आई कैन यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू सेट स्कूल नेम ऑफ अ स्टूडेंट, कि कोई भी बच्चा, यस, कोई भी स्टूडेंट का जब मैं डेटा क्रिएट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट उसका स्कूल नेम यही रहने वाला है, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू सेम स्कूल. तो देयर वी यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ये एक डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन हो जाए. कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसका इनिशियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, राइट. तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल according to me to explain what is default constructor. So yeah, it will print the school name. Second, S2 is an object, yes, of student class. Here second is parameterized constructor, that is while doing a constructor call, while creating object, this is what I am doing. This is constructor, parameterized constructor call. I am creating object S2 and I am passing some value. यहाँ पे पास नहीं किया था इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. यहाँ पे I am just passing some value, right, int and character. तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दिस वन. यस, जैसे मैंने बोला कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैल्यूज. यस, जो भी मैं पास कर रहा हूँ वो इनिशियलाइज हो जाता है. तो स्टैंडर्ड एंड डिवीजन में जो भी हम पास कर रहा हूं मैं इनिशियलाइजेशन के लिए, इट विल गेट स्टोर्ड. यस, दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. नाउ देयर आर टू वेज, just two different ways to create objects of parameterized constructor. आप ऐसे भी just syntax, that's it, आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो. तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ये क्या है. So there are just two different ways, yes, to create objects. Yes, so yes, we are done with default constructor, we are done with parameterized constructor. Now we'll see constructor overloading. Constructor overloading means जैसे हम लोग ने मेथड ओवरलोडिंग किया, yes, फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप है ही नहीं. ओके, रिटर्न टाइप का इश्यू, मतलब प्रॉब्लम निकल गया. फंक्शन नेम सेम होना चाहिए, सेम कंस्ट्रक्टर नेम सेम होना चाहिए, एंड आई कैन ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. जैसे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में देखा था, टाइप से ओवरलोड करो वरना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से ओवरलोड करो. हियर आई एम डूइंग विथ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. या इन फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, yes, this parameterized constructor, I am taking 2 arguments. Here I am taking 3 arguments. So this is just overloading. Yes, same function name, पहले method overloading में function name same रखते थे, constructor overloading में constructor name same रखेंगे. Yes, so S4 I am creating object of student, one more object of student class, and now here which constructor will get called? Okay, it will call this constructor because I am passing 3 arguments inside this constructor call. Yes,
it will initialize these things. Okay, private public जिसको नहीं समझा होगा, I am again explaining. Public data members, yes, public data members can be accessed using object names. क्या क्या है यहाँ पे public data members for ourselves, like roll number है, standard है, division है, school name है. Yes, I am accessing school name using object name. Yes, I am accessing, where is it? Yeah, I am accessing standard using object name. I am accessing division using object name. Yes, but here my name is a private data member. तो private data members के लिए restriction क्या है? Private data members can only be accessed by member function belongs to the same class. Yes, this get name is a member function belongs to the same class. So I can access this data member using, yes, only member function. I can't access this data member by using just object name. If मैं लिखूंगा तो मुझे error दे देगा. Yes, that's why I'm just calling the function to access that name. Let's run the code. Yes, let me explain you simultaneously. Yes, first क्या कर रहे हैं? Default constructor will be called. Default constructor में क्या कर रहे हैं हम लोग? Print. Yes, this is default constructor. It is printing. Yes, okay. It is just initializing the school name. जैसे मैंने बोला, if I am storing the data for students belong to same school, उनका school name same होने वाला है. Yes, तो उसके लिए name of the school initialize हो जाना चाहिए. Yes, तो it is printing XYZ high school. Yes. Second, parameterized constructor call है. यहाँ पे just मैंने 2 बार लिखा because I wanted to just give you the syntax how I can create a parameterized object of parameterized constructor in 2 ways. In 2 ways, initialize or whatever, declare. Okay, so this is one what I'm passing 12NB. Yes, 12NB, and second time it is 12NA. This is parameterized constructor. I am passing parameters in constructor call while creating object. And the next one is, yes, this is constructor overloading. I am just overloading this. In this case, I am overloading with respect to number of arguments. Overloading में ध्यान रखना है. Yes, constructor name same होना चाहिए. That's it. Because यहाँ पे हमारे पास return type नहीं है. Constructor में return नहीं होता. Yes. Constructors are used generally to initialize the things. Okay, so this is what it is printing, 12C, and yeah, and see यहाँ पे मैंने s4.name नहीं लिखा, s4.standard, s4.division. Yes, I am creating an object. I am passing the arguments. But I am not accessing the name directly because it is private data member. अच्छा, इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है, कुछ लिखना है? हाँ ना? लिखना है सर. अच्छा, ये एग्जांपल लेना है. कॉपी पेस्ट कर लो चैट बॉक्स में. I don't think इतना बड़ा जाएगा. Is constructor always declared inside public? Yes, constructor always declared inside public. Because जब भी object create होता है, yes, constructor call होना चाहिए. So it is by default it is declared inside public.
Next will, okay, can it be declared outside the class justly? Yes, we can do it. It can be declared outside the class. जैसे same way, suppose कौन सा लेते हैं, suppose ये parameterized constructor है. One of your friend is asking, can we declare yes, a constructor outside the we can't declare outside the class, we define outside the class. Yes, हमें declare तो अंदर ही करना पड़ेगा, like this. See, yes, declare तो अंदर ही करना. Same way, जैसे अपने हम लोग ने methods में देखा था, outside function we can have constructor out, we can define constructor outside the class. Yes, same चीज है, syntax भी same ही होगा. Yes, अच्छा आप लिख रहे हो क्या? Done, sir. डन. अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लो ना, यही अब प्रिंटिंग जॉब्स तो ठीक है. डन, तो विल मूव फॉरवर्ड. ओके, यस, विल गो फॉर कॉपी कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट. अगेन कंस्ट्रक्टर में भी जो ये सेम एग्जांपल फॉलो करना है तो रखो. जस्ट कीप वन एग्जांपल इन योर माइंड to explain constructor, all types of constructors. Yes, just explain through example. मतलब example रखो, give an example and explain the terminologies. जो भी पूछता है, yes, what is constructor, default constructor, जो भी पूछता है, just give example then explain. Next is yes, this is copy constructor. Copy constructor, a copy constructor is a member function that initializes an object using another object of the same class. A copy constructor has following मतलब ऐसे prototype तो उसका, yes, उसका syntax होगा. Let me give you the basic syntax. कहाँ पे लिखो, comment करना. Okay, comment में लिख देता हूँ. Yes, multi-line comment सबको पता है. Yes, class name, constant, class name, yes, then address, and जो भी object में से copy कर रहे हो, that is old object name. So this is a basic syntax of copy constructor. तो क्यों use करते हैं? Yes, to initialize through already existing object. Suppose कोई new object create कर रहा हूँ and I want properties from other object, like object 1 create किया हुआ है. Yes, but object 1 में जो भी data है मुझे object 2 में चाहिए, तो I will use copy constructor. Yes, this is copy constructor. जैसे मैंने syntax दिया. Yes, class name, constant, keyword, class name, and address of operator object set. Sorry. Okay, see this. This is my class. Yes, int xy, private data members, and my class is a constructor. Yes, initializing values of x and y. This is parameterized constructor, since I am passing parameters inside through it. Yes, yes, this is copy constructor. Okay, yeah, this is data member functions. Just return, no, it is member function returning x and y, just returning values. Okay, see this. First, I'm creating object 1 of my class. First object of my class, parameterized constructor call होगा this one. Yes, तो object 1 create होगा. अच्छा, object 1 के x में स्टोर क्या स्टोर है 10.
y में 15 है. जैसे मैंने बोला if I want to copy the data from this first object to this object, what I will do is I will just write like this, like object to equal to, I will first, of course, you can do it on 2 lines, using 2 lines. First just create the object and then assign, or do it on the same line. That is, we saw that is what is the difference between initialization and yes, assignment. So here I am creating object 2 and उसमें कॉपी कर रहा हूँ डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट 1. तो एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा दिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, लाइक ऑब्जेक्ट 1 पास हो रहा है यहाँ पे. यस, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल में ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस पास हो रहा है. इतना डीप में एक्सप्लेन करने आपको पूछेगा भी नहीं. दे विल जस्ट आस्क यू एन एग्जांपल एंड व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो बेसिक डेफिनेशन लिखना है कि ऐसे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन, यस, used to initialize an object using another object of the same class. Yes, we are doing that. We are initializing object 2 using object 1. Object 1 का जो भी डेटा है I want in object 2, तो I am initializing object 2 with object 1. That's it. Yes, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यहाँ पे. Yes, object 1 जो भी सी मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल में ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस पास हुआ. यस, ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस पास हुआ. यस, नाउ आई एम जस्ट कॉपिंग दी वैल्यूज फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 2. ऑब्जेक्ट 1 का x ऑब्जेक्ट 2 के x में जा रहा है, ऑब्जेक्ट 1 का y ऑब्जेक्ट 2 के y में जा रहा है. लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड वेल. यस, ऑब्जेक्ट 1 का x में 10 था, y में 15 था. आई जस्ट कॉपीड इट इनटू ऑब्जेक्ट 2. Any doubt, anyone? This is copy constructor. हाँ ना लिखना है, कुछ नहीं, नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा. समझा, वेरी गुड. अच्छा, कुछ लिखना है तुम्हें. यहाँ पे भी मैंने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल यूज किया. जब भी मेरे को अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर समझना है, आई विल अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन यूजिंग दिस एग्जांपल. यू कैन डू द सेम थिंग. कीप वन एग्जांपल, एक्सप्लेन द स्टफ. डिफरेंट क्वेश्चंस पॉसिबल है आपके बोर्ड एग्जाम्स में. yeah? Once you understand this example, you can answer any questions on copy constructor. Okay, shall we move forward? कोई लिख रहा है तो कुछ पूछना है और. See, if you have doubt, you can unmute and ask directly. Typing में time जाता है. Okay, let's move ahead. Copy constructor. Yes, one more thing is there. आपको ये है ना, destructor is there in your syllabus, right? Yes. Okay, let's understand destructor. तो destructor क्या होता है? Destructor in C++, yes, these are member function. जो हम लोग constructor क्यों यूज करते हैं? Yes, constructor कहाँ पे यूज करते हैं? While creating object and initializing the data for that object, उसके लिए constructor यूज करते हैं. We use destructors जब भी object destroy हो जाता है.
हाँ, हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं. यस, डिस्ट्रक्टर का कोड लिखा नहीं है. लेट्स क्रिएट एन एग्जांपल फॉर डिस्ट्रक्टर. Yes. Let me keep private data members, or let's say number 1, number 2. Yes, constructor my class. Yes. Okay, let me write. This is constructor call. This is constructor call, and now let's see. Okay, let's अभी डेटा मेंबर्स ले लिया, इनिशियलाइज भी कर देते हैं. Yes, num1 equal to x, num2 equal to y. This is parameterized constructor. Let's see, let me give one member function which will print the data for me. Yes, num1 and num2. Yes, let's see. Okay, I'm printing the just without. Okay, it is C compiler. सबको पता है आईओ स्ट्रीम क्यों लिखते हैं? Can anyone tell me why do we write IO stream? Include IO stream. What do we actually mean by when we write IO stream? Function library, right? We are using cout and cin functions. हमने definition उसके लिए लिखा नहीं है, but still we are using it, right? So we are just including a library for those functions. Yes, copy there. Okay, let's one more thing is that destructor. Yes, destructor का syntax क्या होता है? Yes, this. My class. See, destructor का syntax. This negation के लिए use करता है, right? The same key. Yes, class name. Very good, Tejas. Class name. Now
कुछ लिख देते हैं इसके अंदर तो पता चलेगा कॉल कब हुआ. यस, डिस्ट्रक्टर कॉल. ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ. नाउ मेन फंक्शन के अंदर let me create the class of this object, that is object 1 or whatever it is. Okay, parameterized constructor है तो पास भी कर देते हैं वैल्यू कुछ, let's say 10 and 20. Now I'm just calling a print function. Yes, and return, that's it. Yes, so this is destructor. Syntax देख लो. Yes, a key you used for negation, class name, and that's it. So जब मेरा मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन एंड होगा, जब आपको पता होगा कि लोकल वेरिएबल्स अपने डेटा स्ट्रक्चर में पड़ा होगा, सिंस लोकल वेरिएबल या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिलीट हो जाते हैं वंस द फंक्शन एग्जीक्यूशन completed. Yes, जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है इनसाइड दिस फंक्शन, इनसाइड मेन फंक्शन जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, yes, वो सब डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली once my function is get executed. ये तो मेन फंक्शन का बात कर रहा हूँ. कल हमने फैक्ट का फंक्शन लिखा था, उसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज कर रहा हूँ मैं, once my function execution is completed, तो all the local variables get deleted. Yes, ये पता होगा आपको. Similarly, see, object is nothing but a local variable inside my main function. So once my execution of main function is completed, it will get deleted. And before deleting, it will just call, yes, destructor. It will just distract the object. That's it. Let's try to run the code. Yes, constructor call हुआ and destructor call हुआ. Since I am not explicitly calling this here, कहीं पे call नहीं कर रहा हूँ. It's not a method. It's a constructor. Yes. समझा? किसी को डाउट है डिस्ट्रक्टर? व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? नहीं समझा, आपस में रिपीट करोगे? क्या होता है डिस्ट्रक्टर? यस, डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है और यू कैन या इन अ क्लास दैट डिलीट एन ऑब्जेक्ट. हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी क्या कॉल करते हैं? यस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. कंस्ट्रक्टर समझा आपको? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब ये क्या हो रहा है? ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. यस, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. यस, दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेकिंग 2 आर्गुमेंट्स. तो व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो रहा है. तो व्हाइल डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है. अभी ये तो समझा सर कि ये क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, पर डिलीट कहाँ पे कर रहे हैं? कुछ डिलीट के लिए तो लिखा नहीं है. तो डिलीट कब होता है? सी, मैंने बोला कि जो भी फंक्शन होता है, मतलब व्हाटएवर फंक्शन यू आर राइटिंग, अभी कल हमने फैक्ट का लिखा था, स्वैप का लिखा होगा आपने फंक्शन. यस, तो जब भी जो भी फंक्शन हम लोग लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज करते हैं, राइट? अभी सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज अपार्ट फ्रॉम ओप्स का कंसेप्ट. ओके, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि लोकल वेरिएबल डिलीट हो जाते हैं. जो भी ये स्वैप के फंक्शन के अंदर वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, सपोज दिस इज अ फंक्शन. यस, जब मैं मेन फंक्शन के अंदर यहाँ से मैं स्वैप का फंक्शन कॉल करूंगा, जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तब ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा. यस, and it will create variable x. Yes. Once the execution completed, once I return from this. Yes, once I go from line number 38 to next 39th line, all the variables declared inside this function
gets deleted because these are local variables. All the whatever data जो भी variables आपने declare किया है, yes, function के अंदर will get deleted. Once आप ये सुना होगा आपने stack of function, जितना भी function call करते हो, it gets stored inside stack. No need to go in much depth. Just understand that once my function calling is done, function execution is done, all the variable declared inside the function gets deleted. Similarly, object जो भी मैंने declare किया है यहाँ पे is variable ही एक type का. Yes, object is a variable inside my main function. So once my execution of main function is done, yes, object will get automatically deleted, and while deleting an object, it will call destructor because it's an object of this my class. अभी समझा? Yes, sir. समझा. So this is a code. What happened? Yeah, swag कहाँ पे लिखा है? ये हटा दो. Yes, destructor. So just keep this standard example and explain in the exam. I think you must take this example. Just screenshot ले रहे हो तो screenshot ले लो. Just keep this example. Exam में आता है. Just write this example and explain. 3-4 line लिखो to explain what is destructor. You will write. अच्छा वो भी चाहिए तो मैं dictate कर देता हूँ. If you want to write, yes, destructor is yes nothing but a member function in a class that deletes an object. कब call होता है? They are called when the object goes out of the scope, such as when the function ends. जैसे मैंने बोला function खत्म होता है तभी variables inside the function जो भी local variable से delete हो जाता है. Yes, function ends or program ends. Yes, destructor yes, syntax याद रखना है हमें. Syntax, yes, this, then constructor का name of destructor is same as, yes, constructor का name, yes, जो भी आपको परफॉर्म करना है उसके अंदर. This is syntax for destructor. Yes, one more thing. और destructor के अंदर आप argument pass नहीं कर सकते. You can't pass argument through the destructor because anyway destructor जब call होगा तभी आपका object delete हो गया होगा, right? तभी आपका object होगा ही नहीं. So there is no meaning of passing arguments. ऐसे याद रखो. So yes, destructor does not have arguments. याद रखना, important point है. Yes, return type भी नहीं होता है. You can write that point also. It has no return type. Yes, आपको example याद होगा तो दुनिया भर का point लिख सकते हो तुम लोग. Yes, return type नहीं दिख रहा है, नहीं होगा, लिख दो ना एक point, 1 mark मिलेगा. Are you understanding? Yes. Yes, so just write and keep an example, explain the concept. That's what I prefer. Done with destructor. Any Yes. doubt, anyone? Yes, we'll go for inheritance. Yes, now there are
2 to 3 things here. Inheritance क्या होता है? First, I want you guys to answer me. What is inheritance? Normal. I don't want a definition, proper definition नहीं चाहिए. क्या होता है उतना बस हिंदी में बोल दो. What is inheritance? Yes, सुना होगा. Dad से inherit करता है कुछ. ये ऐसा भी सुना, मतलब डैड कलर ब्लाइंड है, मतलब मॉम कलर ब्लाइंड है तो बच्चा है, ऐसा सुना होगा कहीं पे. यस, तो वन Yes. so that is the basic meaning of inheritance, that is we are inheriting from our parents. Yes, so here there will be a parent class and a child class. Child class will inherit some or all features from parent class. थोड़ा थोड़ा light bulb click हुआ. Yes, here class student. Yes, someone, okay, Tejas has answered. One class is created from other ancestor class. Very good, Tejas. Yes, base class, this is parent class. Parent class भी बोलते हैं. Right now, parent class. Different books use different names for this. Base class, super class, parent class. Yes, तो मैं यहाँ पे भी एक मैंने स्टैंडर्ड एग्जांपल यूज किया. यस, सी स्टूडेंट ऑफ सोमया कॉलेज, अभी जो भी सोमया में है, यस, उसका एक क्लास बनाया. यस, तो फॉर दो स्टूडेंट एड्रेस ऑफ सोमया कॉलेज. यस, आई हैव जस्ट एंड कॉलेज नेम सेकंड थिंग. यस, तो स्टूडेंट ऑफ सोमया कॉलेज के लिए, सब स्टूडेंट के लिए कॉलेज नेम सेम होगा, केजी सोमया व्हाट एवर. यस, अभी सोमया तो बहुत बड़ा है, सपोज केजी सोमया के लिए बना रहा हूँ. यस, तो स्टूडेंट ऑफ केजी सोमया कॉलेज के लिए कॉलेज नेम सेम होगा सब स्टूडेंट के लिए. यस, एंड उसका एड्रेस, सोमया कॉलेज का एड्रेस तो चेंज नहीं होने वाला फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. यस, सो दिस प्रॉपर्टी आई हैव इन माय स्टूडेंट क्लास. Now suppose student of yes, सोमया कॉलेज के साइंस स्टूडेंट के लिए क्लास बना रहा हूँ. स्टूडेंट बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम. यस, तो दैट क्लास विल इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द parent class student. Yes, inherit what? It will inherit college name and address. It will inherit. Yes, this is public. Okay, this is that just a data member of, yes, science student का class का data member है, that is division. If you are belong to science student, which division? Yes, okay, I am creating an object for science student class, that is child class, since this class is inheriting from student class. Syntax याद रखना. Yes, syntax क्या है? Class keyword, parent class name, sorry, child class name, colon. Yes, public, अभी के लिए keyword as a keyword समझो. I will discuss that point soon. कभी public, protected, private कभी यूज करना है. Yes, this is nothing but access specifier. Student is a parent class name. Yes, so science student is inheriting from student. Yes, now science student का एक object बनाया क्लास का. Now I am just calling, yes, college name, that is KJ सोमया. See, objects किसका बनाया? Science student का बनाया, but I am taking property from parent class. See, college name, because it is inheriting from parent class. Child class inheriting from parent class, so I can inherit the properties of parent class. Here I am just initializing it KJ सोमया. Yes, college name print किया, whatever, printf का stuff. Now again second, yes,
देखा हमने डेटा मेंबर को इनहेरिट किया, अभी मेंबर फंक्शन को भी इनहेरिट कर सकता हूँ. यस, इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज. तो ये मेंबर फंक्शन को इनहेरिट कर रहा हूँ. सी ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप साइंस स्टूडेंट, बट आई एम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ parent class that is student. Yeah, this is इसका खुद का है डेटा मेंबर divs that is initializing it. That's it. To explain what is inheritance. I hope you understood this. Inheritance. किसको डाउट है inheritance में? नहीं समझा और कुछ दूसरा डाउट? हाँ ना? Yes, again I took a standard example. Yes, ये एग्जाम्पल तो सबको याद रहेगा. Yes, कोई कॉलेज है, उसके स्टूडेंट के लिए कोई क्लास बनाया. Yes, साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट जो भी होगा, it will inherit properties. These two properties at least they will inherit. That is, कॉलेज का एड्रेस चेंज नहीं होने वाला फॉर साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट, कॉलेज का नेम चेंज नहीं होने वाला है. तो this can inherit the things from his parent. जैसे हम inherit करते हैं surname from our father. Second example. Okay, so there are bunch of examples. You just take one example, explain the concept. अच्छा, डाउट है? हाँ ना? Shall we move? No. Okay, आगे जाए. Yes. Okay. Next is multi-level inheritance. Yes, in multi-level inheritance, see, यहाँ पे basic logic क्या है कि in multi-level inheritance, a class can also be derived from one class which is already derived from another class. Again, I'm repeating the statement. A class can also be derived from one class. Yes, a class can also be derived from one class which is already derived from another class. A best example is me, my child, and my grandchild. This is the best example, standard example. So, यहाँ पे मेरा बच्चे का बच्चा is my grandchild. Okay, he or she will inherit from her or his father. Yes, and my child will inherit from me. Simple. तो यहाँ पे क्या, जैसे सोमा कॉलेज का देखा था हमने, नेम एंड एड्रेस सेम होगा. यहाँ पे सी सरनेम सेम होता है. हमारे दादाजी का सरनेम सेम था, क्या सरनेम चेंज नहीं होता है. तो आई विल इनहेरिट अ प्रॉपर्टी दैट इज सरनेम, लास्ट नेम, या रिलीजन, हिंदुइज्म. देन माय चाइल्ड, सेकंड पब्लिक स्ट्रिंग कंट्री, या मेरे डैड जो कंट्री में रहते थे वही कंट्री में मैं रह रहा हूँ. मोस्टली तो यही होता, अभी एक्सेप्शनल केस पता नहीं, बट ये मैं मेरे डैड से इनहेरिट कर पाऊंगा. यस, जो कंट्री है उनका वो मेरा भी कंट्री होगा, दैट इज इंडिया. यस यस, और मेरे कुछ अलग डेटा होंगे, डेटा मेंबर्स. यस, आई एम क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ माय ग्रैंडचाइल्ड. अगेन यहाँ पे इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सेप्ट, सिंटेक्स याद होना चाहिए. यस, क्लास, यस, जो भी क्लास से इनहेरिट कर रहे हो, पेरेंट क्लास का नेम, या सॉरी जो भी क्लास है तुम्हारा उसका नेम, देन पब्लिक, देन पेरेंट क्लास का नेम. ओके, अगेन क्लास नेम,
सेमीकोलन पब्लिक कीवर्ड एंड यस जो क्लास से इनहेरिट कर रहे हो दैट इज पेरेंट क्लास का नेम. यस नाउ this is I'm creating object of my grandchild class. yes age object age में 22 सेट कर रहा हूँ, नेम में always जो मेरे ही डेटा मेंबर्स है. yes then print whatever print stuff. see यहाँ पे see I am accessing yes property from my dad. उल्टा समझो अभी, मी में मेरे दादाजी को पकड़ो. यस माई चाइल्ड में मेरे डैड को पकड़ो. सॉरी यस माई चाइल्ड में मेरे डैड को पकड़ो. और लेट्स से यस माई ग्रैंड चाइल्ड ने उसका एज एंड नेम प्रिंट कर दिया. यस नाउ ही इज इनहेरिटिंग कंट्री फ्रॉम हिज फादर एंड ही इज ऑल्सो इनहेरिटिंग फ्रॉम मी अ लास्ट नेम एंड religion, that is Hinduism. yeah see object किसका है? my child, my grandchild का है, but it is inheriting yes properties from me as well as my child. sorry yes my child. okay अच्छा इसमें किसी को डाउट है कुछ? any doubt anyone? this is multi level inheritance. yes मल्टीपल लेवल्स में इनहेरिटेंस हो रहा है. मैक्सिमम 3 लेवल्स तक का पूछेंगे. 3 लेवल्स तक का ये बेस्ट एग्जांपल है इफ यू वांट टू गिव ऑन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. डाउट है, पूछना है कुछ? नो. नहीं समझा किसी को? लेट्स मूव फॉरवर्ड. Next is multiple inheritance. So in multiple inheritance, a class object a class can also be derived from more than one base class using a comma separate list. यहाँ पे देखो. See, previous case में क्या कर रहे थे? My child was inheriting from me. My grandchild was inheriting from my child. एक ही क्लास में से इनहेरिट कर रहे थे, एक ही स्पेसिफिक क्लास में से इनहेरिट कर रहे थे. यहाँ पे my child class is inheriting from two class A and B. yes base class बोलते हैं, parent class बोलो, जो बोलना है बोलो. yes A and B are two classes, separate classes. see B is not inheriting from A. These are two separate classes, and my child class is inheriting from class A and class B. so this is what the basic syntax. yes for multiple inheritance comma से separate करते हैं from classes through which it is inheriting. yes A से inherit कर रहा है, B से inherit कर रहा है. अभी कोई और एक क्लास होता Z तो comma करके Z. yes C member function A है, member function B है, inheriting from class B. yes created object of my child class. yes calling function of this this is data function members of the same class, function member of class B, function member of class A. yes I'm just calling the function members, I'm accessing the function members. yes inheriting, this is inheriting from class A, inheriting from class B, and that's it, and so on. yeah hello. any doubt anyone? This is multiple inheritance. No. Let's move ahead. अच्छा किसी ने डाउट पूछा? सर स्क्रॉल upward. okay you want to copy? okay multiple, you want to copy multiple, right?
Okay, multi. Done, pages. Yes, sir. Okay, nice. Okay, I will let you. Okay, done. Next. Okay. Access specifier तो आपको समझा है? Yes. Modes of inheritance. There are different modes using access specifier. We'll do it later. First, let's understand polymorphism. तो polymorphism क्या होता है? Yes, I'm inheriting. Yeah. Suppose मैंने class derive किया animal. Yes, it's a base class. We can say parent class also. Yeah. तो उसमें एक मैंने method define किया कि void animal sound. कि animals का yeah, animal makes a sound. तो उसके लिए मैंने एक function बना दिया. Now, when you override this function, it is override for different purposes, right? Yes, मैंने एक मेरा peak class है. It is inheriting from animal class. See, polymorphism is a concept based on this inheritance only. Yes, actually the word polymorphism means having many forms. Okay. So in simple word, we can define polymorphism as the ability of message to be displayed in more than one form. तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? या एनिमल साउंड फॉर पिग. पिग का कुछ अलग साउंड होगा. यस, डॉग है, डॉग का कुछ अलग साउंड होगा. तो मैंने एनिमल क्लास के अंदर एक मेथड भले डिफाइन किया है कि एनिमल साउंड. यस, बट it is different for different animal. So if I'm inheriting from this class animal, yes, pig is inheriting from class animal, it will change the animal sound method. It will override. So this is what polymorphism is, nothing but combination of function overriding and yes, inheritance. So I'm creating a class. I'm sorry, I'm creating object of class animal, object of class pig, dog, since dog and pig are inheriting from animal. Yes, animal sound call kiya. Let's see what happens. Yeah. Yes. So based on the need, yes, we are changing the definition of animal sound function. Yes, अभी इसमें यही example देके you write 5 to 6 line what actually polymorphism is. So you will be done. Any doubt, anyone? Polymorphism. So scroll upward. Okay, upward. Okay, main के ऊपर करेंगे. Okay. Let's go to next topic. Okay, कुछ बचा है इसमें? नहीं. Okay. Let's understand access specifiers. हमने public private देखा तो है, but एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं.
So first of all, public. Yes, members are accessible from outside the class. जब मैं लिखता हूँ public int x, x is a public data member. Sorry, अच्छा ये class नहीं ना, class के लिखना पड़ेगा. Let me define a class first. My class. Let's see. Yes, X is a public, yes, public data member. So if I create a object of this class, yes, my class, I can access from, since I am accessing X outside the class. Yes, I am accessing X outside the class. I am just assigning value to the X. Since it's integer, let's take 12, and I am printing it. Yes. So basic definition है public access specifier का. So if you use public access specifier, members are accessible from outside the class. Okay. Second, private. Yes, int y. Suppose if I try to access y outside the since I am accessing y through object name outside the class, like main function के अंदर कर रहा हूँ. So it will give me an error because it's a private data member. Yeah, I can't access. Yeah, it's giving me an error. Yes, my class y is a private within this context. So y is a private data member. I can't access y from outside the class. So if I want to access y, I can only access using a member function. Yes, if I want to access y, what's the solution for this? Or let's say return int get y method. It's a method, just method. Okay, which will return value stored in y. That's it. So now I can access y using this member function. Yes, instead of doing this, yeah, but still again, if I want to initialize it, so how I can achieve that? Object y, or let's say object get y. Let's try this. I didn't try any. Okay, let's assign like this. होता है क्या नहीं? Yes, it will return y, and I am putting 10 inside y. Let's try to do this. It will give error. Yes, private error. तो कैसे करेंगे? If I want to initialize, I will pass the value to this function. वैसे भी कर सकते हैं. Okay. तो हम लोग नेम कर देते हैं set y. Set y. Okay, it will just set the value of y. It will take a number from me and initialize y. Y equal to number. And if I want to print it, again I need to write one more function, get y.
now set y के अंदर I will pass whatever value I want to set and get y में I will just print. तो सी आउट के अंदर लिखते हैं not printing anywhere, right? Okay. Let's try to run this code. What happened? क्या हुआ? क्यों error दे रहा है? Can anyone tell me? What's this error? सर वो Yes. मेंबर फंक्शन प्राइवेट में डिक्लेयर किया ना, पब्लिक है उधर. Yes, very good. Who is this? तेजस. Very good, Tejas. Member function मैंने प्राइवेट में रखा है, right? ये दोनों. तो इसको पब्लिक पे रखना पड़ेगा. तो let's do one thing. इसको ही हटा देते हैं, ऊपर दे देते हैं. Yes, get and set method important है. तो yeah, now it will work. Yes. क्या वार्निंग दे रहा है? ठीक है, इसका वार्निंग दे रहा है. नो इश्यू. बोल रहा है कि इसका रिटर्न टाइप इंट सेट किया है बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो. इसका वॉइड कर दिया. इट विल नॉट गिव एन वार्निंग. ओके, सो दिस इज पब्लिक एंड प्राइवेट. तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग यस member functions. The third one, private का definition लिखा आपने. Members cannot be accessed from outside the class. It can only be accessed from inside the class using member functions. The next is protected. Protected access specifier. Yes, protected access specifier means if you declare any members inside protected access specifier, then those members cannot be accessed from outside the class. Private जैसा लग रहा है. Those members cannot be accessed from outside the class. However, they can be accessed in inherited classes. Yes, inherited classes हमने just inheritance दिखा. If okay, I will write some another class inheriting from this my class, and in that class I could able to access. Yes, they can be accessed in inherited classes. Okay, let's do one example. Let's say protected के अंदर मेरा z है. I will define one more class inheriting. See, पहले तो ये देख लेते हैं कि it cannot be accessed using object outside using object and outside the function. Okay, let's try to access z. It will give an error. Error दिया, z is protected, so member function cannot be accessed from outside the class. Now we'll see they can be accessed in inherited classes. So inherited classes, like let's take an example. Class क्या syntax होता है? Yes, inherited class को लिखने के लिए क्या सिंटेक्स होता है? क्लास जो भी yes क्लास चाइल्ड क्लास है उसका नेम, देन इनहेरिटिंग के लिए सेमीकोलन, पब्लिक एंड माय क्लास. ओके, so yes, class. Okay, child. Let's take it. So this is child class inheriting from my class. Now I will try to access. They can be accessed in inherited classes. Definition ऐसा है. So I will try to access z from this class. Okay, let's say इसका भी कुछ डेटा मेंबर्स है, एक रख देते हैं. For example, let's say number कुछ है. क्या अभी इसका कोई मेथड है
void print z, ऐसे मेथड लिख देता हूँ, ठीक है, in which I will be accessing z. I will be accessing z. Let's now try to print. Yes, cout I am accessing z from inherited, yes, class. z का वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, पहले तो सेट करना पड़ेगा, यस, z इक्वल टू जो भी वैल्यूज आएगा तो उसके लिए पास भी करना पड़ेगा वैल्यू कुछ, whatever it is, let's say, okay, नंबर कहीं पे यूज नहीं किया है, कुछ भी दे देते हैं, let's say m. तो I'm just using z in the child class, using because it is protected in my parent class, so I will be using that inside my child class. Okay, let's now try to run the code. Okay, कहीं पे error दे रहा था, okay, ये निकाल देते हैं error वाला part. See, now I am trying here. कहाँ पे गया ऑब्जेक्ट भी, मुझे पहले तो पास करना पड़ेगा प्रिंट z, z के अंदर इनिशियलाइज होके प्रिंट होना चाहिए, यस, तो लेट मी पास वैल्यू 3. ये क्या कर रहा हूं मैं, आई एम कॉलिंग प्रिंट z सिंस माई चाइल्ड, अच्छा ये माई क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, लेट मी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, child class, that is object 1, let's say. So I will be calling this using object 1, print z, yes, and I am passing value, I am accessing the data function. Let's try to run the code. Yes, why it's showing like this? Yes, Tejas. Hello. Yes, protected का definition तो यही है. Members can be accessed from outside the class, however they can be accessed in inherited classes. So I am accessing in the inherited class. जो भी child class is inheriting from my class, that is parent class. Yes. सर प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड आएगा ना, कहाँ पे? फर्स्ट वाले क्लास में. फर्स्ट वाले, ये वाला नहीं बराबर है वो. It's printing 310 while I'm passing only 3. अरे we didn't write handle, no? हैंडल, Yes, that's why it's 3 only, right? Yes, यहाँ पे लिख देते हैं handle. Yes, it is. Yeah, we can access from inherited class. I hope protected का meaning समझा. तो you can take this standard example. अभी तीनों access specifier यहाँ पे covered है. Okay. तो if access specifier पे question आता है, you just give this example and explain the whole stuff जो भी है definition के साथ. Okay, you want to copy? Yes, I'm accessing Z from inherited class because it is protected. I can't access it from outside, that is main function, through object name.
Done. Yes. Switch to modes of inheritance. You have in your syllabus modes of inheritance. Yes. Let's start with modes of inheritance. Okay, let's take this example only to understand modes of inheritance. Yes, what are different modes you know of inheritance? Yes, public mode, protected mode, private mode. There are three different modes of inheritance. Yes, public mode. क्या होता है public mode? This is the public mode. मैंने बोला था ये बाद में करेंगे, right? Since my child class is inheriting from my class, that is parent class, through public mode. Public mode का meaning क्या होता है कि if we derive a subclass from a public base class, okay, so this my class is base class, parent class. If I derive a subclass or parent child class, yes, from parent class, then the public member of the base class will become public. क्या बोला मैंने? Public member मतलब public members of base class becomes public in the derived class, and protected members of the base class will become protected in derived class. जो भी protected होगा becomes, yes, protected, and जो भी public होगा becomes public. Yes, तो अभी Z में से कोई दूसरा क्लास इनहेरिट हो रहा है, तो for that it Z is you can access Z through the inherited class. Yes, but Z is protected for this child class. In this child class, जो भी, see, child class is inheriting from parent class through public mode. यहाँ पे हमारा public mode है. See, child class is inheriting from parent class through public mode. So if we derived a subclass from public class, then public members, like public members, that is X, remains public in the inherited class, and protected members becomes protected in inherited class. This is public mode. See, यहाँ पे example will be difficult for you now. Just understand the logic, understand the definitions first. Okay. So if I am inheriting from parent class through public mode, तो parent class का जो भी public data members है वो public होगा, protected जो भी है वो protected होगा. Okay, so public याद रहेगा. Let's go for the second mode of inheritance, that is protected mode. If we derive a subclass from protected base class, yes, if a child class is inheriting from if a child class is inheriting from parent class in protected mode, वहां पे क्या लिखूंगा? public की जगह पे I will write protected. If a child class is inheriting in a protected mode from parent class, क्या होगा? Then both public member and protected member of the base class, that is parent class, will become protected in derived class. Yes, उसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? You are inheriting from parent class in protected mode, means जो भी public, protected
प्राइवेट जो भी डेटा मेंबर्स है सब तुम्हारे लिए क्या होगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा. यस, यू आर, बिकॉज यू आर इनहेरिटिंग इन प्रोटेक्टेड मोड. पब्लिक मोड में क्या था, पब्लिक मोड में जो प्राइवेट था वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड था वो प्रोटेक्टेड रहता है, जो पब्लिक है तो वो पब्लिक ही रहने वाला है. बट इफ यू आर इनहेरिटिंग इन प्रोटेक्टेड मोड फ्रॉम योर पेरेंट क्लास, यस, देन पब्लिक मेंबर्स जो भी है, पब्लिक मेंबर्स दैट इज यहाँ पे क्या है एक्स, वो भी प्रोटेक्टेड हो जाता है इन चाइल्ड क्लास. So listen to me carefully. If we derived a subclass from protected base class, then both public member and protected member of the base class will become protected in the derived class. Yes. And the next is private mode. That is private mode. If we derived a subclass from a private base class, yes, private mode के लिए here I will write प्राइवेट कीवर्ड. इसका मीनिंग क्या हुआ, माय चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटिंग फ्रॉम माय पेरेंट क्लास इन प्राइवेट मोड. ओके, मीनिंग क्या हुआ, इफ वी डिराइव अ सब क्लास फ्रॉम अ प्राइवेट बेस क्लास, देन बोथ पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्राइवेट इन द डिराइव्ड क्लास. जब जितने भी मेंबर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सब प्राइवेट हो जाता है, बिकॉज आई एम इनहेरिटिंग एज अ इन अ प्राइवेट मोड फ्रॉम द पेरेंट क्लास. ओके, किसी को डाउट है, कोई एग्जांपल आपने फेस किया होगा एंड यू आर गेटिंग डाउट इन मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस? यस, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. इट्स इजी, जस्ट 3 definitions है and okay, if you want I can dictate in simple words the 3 definition. Yes, to understand the concept of mode of inheritance. जस्ट बेसिक डेफिनेशन याद रखना है. पब्लिक मोड, इस पे अभी एग्जाम्पल विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन. तो लेट्स अगेन रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ दिस मोड्स फर्स्ट. पब्लिक मोड मतलब क्या होता है, इफ वी डिराइव अ सब क्लास, मतलब मेरा कोई लेट्स मेक ओके बराबर ही है, पेरेंट, इसका नाम कर देते थे पेरेंट क्लास. पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास. यस, तो इफ आई एम डिराइविंग फ्रॉम पेरेंट क्लास, इफ इनहेरिटेंस इज देयर इन पब्लिक मोड, पहले पब्लिक देखते हैं. Yes, so if I am inheriting from parent class in public mode, then all public members in parent class remains public and all protected members, yes, all protected members becomes protected in the child class. एक ही टर्मिनोलॉजी यूज करो, पेरेंट चाइल्ड यूज करो तो पेरेंट चाइल्ड यूज करो. यस, बेस का बेस एंड चाइल्ड यूज कर रहे हो तो बेस चाइल्ड यूज करो. सब क्लास एंड सुपर क्लास यूज कर रहे हो तो सुपर क्लास एंड सब क्लास. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन नेम्स. ओके, सेकंड इज प्रोटेक्टेड मोड. प्रोटेक्टेड मोड में यस, कीवर्ड इज प्रोटेक्टेड. इसका मीनिंग हुआ, since my child class is inheriting from parent class in protected mode. My child class is inheriting from parent class in
protected mode. So when my child class is inheriting in protected mode, then both public as well as derived or the protected members of the base class will becomes protected in derived class. Yes, public as well as protected members सब कुछ protected हो जाएगा. Yes, यहाँ पे X भी protected हो जाएगा in this child class. Yes, because we are inheriting in protected mode. Private है वो तो private ही रहने वाला है. Yes, the next private mode. So if I'm inheriting in private mode, if a child class is inheriting in private mode from parent class, then all the public, protected as well as private members of parent class becomes private for or in child class. समझा सबको? Yes. Okay. So that's it. Yes, last 10 minutes is for doubt session. You can ask doubt to me. Okay. And I will suggest for 12th board exam CS के लिए जैसे मैंने किया, you just keep one example in your hand for every concepts. Like inheritance है, multi-level inheritance के लिए एक example रखो हाथ में and explain the things. Yeah, try to explain the things from that using that example. Sir, coding example में doubt है. Yes, बोलो ना, coding में क्या doubt है? You can share your screen. Yes, Tejas. Yes, तो मेरा एडवाइस यही होगा कि you just take example, उसमें सब कुछ cover. See, if you will take a standard example, try to cover each and every property. So if in multiple inheritance ले रहा हूँ, तो उसके example में I will cover everything. Then just explain. Okay, 10101 output है, code लिखना है. Means you just want this output, right? Yes. Yes, Tejas, you just unmute and tell me what you exactly want to do. You just have तो to print. मतलब वो आउटपुट दिया है उसके अंदर और मतलब अच्छा, वो using star nested for loop, you want to print this yes. pattern. Okay, let's code for it. Okay. Okay. I start from home. Okay, for simplicity, let me initialize to 1. अच्छा, see number of rows लेना यूजर के पास है, you want to keep it static like 3? 3 दिए. Okay, 3 रखते हो. Okay, तो see पहले तो पैटर्न जब प्रिंट करते हो ना, तो आप लोग को है पैटर्न सिलेबस में? Yes, स्टार पैटर्न भी है, अपवर्ड ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल. Okay. So सिंपली ये समझ लो, पैटर्न्स आज के बाद जब भी पैटर्न के लिए कोड करोगे ना, तो फर्स्ट थिंग जो आउटर फॉर लूप होता है, इट इज वर्किंग फॉर माय रोज. मेरा जो आउटर फॉर नेस्टेड फॉर लूप में पैटर्न प्रिंट करते हो, 2 से 3 फॉर लूप यूज करते हो, राइट? यस. तो जो आउटर फॉर लूप है, इट इज वर्किंग, ये माइंडसेट रखो, आउटर फॉर लूप इज वर्किंग फॉर माय रो, इनर फॉर लूप इज वर्किंग फॉर माय कॉलम. ओके, आउटर सर आपने बोला आउटर फॉर लूप इज वर्किंग फॉर माय रो. ओके, रो कितना है मेरे पैटर्न में? 3 है, तो मैं आउटर फॉर लूप को 3 बार रन करूंगा. ओके, आई विल बी लेस देन इक्वल टू 3. यस, आई प्लस प्लस. ओके, चलो अभी हो गया. अभी क्या करना है? अभी अंदर जो प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग बाद में जाएंगे. फॉर टाइम अभी के लिए फर्स्ट रो में कितना डिजिट प्रिंट कर रहा हूं? 1 डिजिट. सेकेंड रो में 2 डिजिट. थर्ड रो में 3 डिजिट. तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इनर फॉर लूप एंड आउटर फॉर लूप. सिंस रो फर्स्ट रो है, रो नंबर 1 है, i इक्वल टू 1 है,
तो मैं एक चीज प्रिंट कर रहा हूँ। रो नंबर 2 है, i इक्वल टू 2 है, तो मैं 2 चीज प्रिंट कर रहा हूँ। रो नंबर 3 है, i इक्वल टू 3 है, तो आई एम प्रिंटिंग 3 थिंग्स। तो आई विल राइट इनर फॉर लूप, यस इट्स गोइंग फ्रॉम j इक्वल टू 1, कहां तक जाएगा तेजस? 3. यस नहीं, इट विल गो फ्रॉम 1 टू i। सी क्या बोला मैंने? फर्स्ट आपका पैटर्न में देखो, फर्स्ट रो में कितना चीज प्रिंट हो रहा है, कितना डिजिट्स प्रिंट हो रहा है? 1। Yes. सेकेंड रो में कितना डिजिट्स प्रिंट हो रहा है? 2. थर्ड रो में 3. रिलेशन है, Yes. यस रो मतलब आई, मैंने बोला आउटर फॉर लूप हैंडलिंग दी रो, यस यहाँ पे हमने लिखा ना आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 3, I is going from 1 to 3. For first row, I equal to 1. For second row, I equal to 2. For third row, I equal to 3. हाँ ना? Yes. Yes. तो अभी मुझे बताओ कंडीशन क्या लिखूंगा यहाँ पे? आप ही बताओगे मुझे। J less than equal to I. Yes, very good. J less than equal to I. J plus plus. अच्छा, अपना ये सॉर्ट हो गया कि मुझे ओके यस। अभी सबको एक स्टार प्रिंट करके देखते हैं, बाद में हम लोग 101 पे लॉजिक पे जाएंगे, ठीक है? एक स्टार प्रिंट कर लेते हैं। फर्स्ट लेट्स प्रिंट स्टार पैटर्न। अच्छा, न्यू लाइन पे कब जाऊंगा? सेकेंड रो में। जब न्यू रो आता है तब न्यू लाइन पे जाता हूँ। यस। एंड एन एंड एल और स्लैश एन कहाँ पे लिखूं? इनर फॉर लूप के अंदर क्या आउटर फॉर लूप के अंदर? आउटर फॉर लूप के अंदर। बिकॉज न्यू लाइन पे कब जाता हूँ? जब रो चेंज होता है। रो आउटर फॉर लूप हैंडल कर रहा है, यस यस। इट इज। तो सी आउट आई विल राइट एंड let's try to print it. Yes, it is printing this. Yes, I kiya of I, it will look better. Yes. Let's now, अभी आपका नीड क्या है? अभी हम लोग रियल क्वेश्चन पे आते हैं। That is 101. अच्छा, ये ट्राइंगल प्रिंट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, स्टार प्रिंट कर दिया। अभी सिर्फ मुझे लॉजिक सोचना है, 10 के लिए लॉजिक सोचना है, राइट? अल्टरनेटली 10 प्रिंट हो रहा है, यस यस। क्या क्या लॉजिक लिखूंगा इसके लिए मैं? यस क्या लॉजिक लिख पाऊंगा? अल्टरनेटली 10 प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में सब 1 है और सेकंड कॉलम में बाद में 0 है, बाद में थर्ड में फिर से 1 आ रहा है पूरा। मतलब सी जब न्यू रो पे आता है तो वो 1 हो जाता है, उसके बाद में अल्टरनेट 10, यस यस। फर्स्ट रो में आता है तब वो 1 हो जाता है। जब न्यू रो पे आता है इट इज 1 0 1 0 1 0, यस। तो यस। मैं जब न्यू रो पे आता हूँ, न्यू रो पे आता हूँ मतलब आउटर फॉर लूप के अंदर चालू, मतलब आउटर फॉर लूप इज हैंडलिंग रो, यस। तो लेट मी डिक्लेयर अ वेरिएबल, लेट्स से x, यस। वो जब न्यू रो पे आता है तब वो 1 हो जाता है। आई विल इनिशियलाइज x to 1। ये कोड मैंने भी कभी पहले नहीं किया है, मतलब किया होगा, बहुत साल हो गया, बट आई एम राइटिंग, मतलब जो सोच के लिख रहा हूँ, पैटर्न को देख के लिख रहा हूँ, ट्राई टू अचीव दिस, ओके। अच्छा, जब न्यू रो पे आता है 1 हो जाता है, ओके। और जब यस जब वो एक बार प्रिंट कर देता है, यस प्रिंट करने के बाद वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, यस माइनस होता है वरना, मतलब 0 होता है तो 1 हो जाता है, 1 होता है तो 0 हो जाता है, यस। व्हाट्स नेम? तेजस, तेजस। यस सर। यस, नेगेशन ऑपरेटर यूज किया आपने कभी?
नेगेशन मतलब नेगेशन ऑपरेटर क्या होता है? 0 का 1, 1 का 0. 1 का 0, यस Yes, that we can use. यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा? x एंड स्पेस लेते, स्पेस डाल देते थोड़ा. Let's keep this much. अभी यहाँ पे x का निगेशन कर दूंगा. x इक्वल टू निगेशन ऑफ x. ये मैंने C में किया था. आई डोंट नो C++ में चलेगा कि नहीं. लेट्स ट्राई. समझा क्यों लिखा तेजस? यहाँ पे क्यों लिखा वो समझा? नेगेशन ठीक है. यहाँ पे क्यों लिखा समझा? 0 आफ्टर प्रिंटिंग x आई विल चेंज x. एंड हर एक बार जब न्यू रो पे आता है आई सेट इट टू 1. दिस इज व्हाट आवर रिक्वायरमेंट इज, राइट? ओके. ये क्या हो रहा है? अच्छा, माइनस में चला जा रहा है. क्या गलती किया? नेगेशन इज माइनस. यस, ओके. अभी हम लोग इसको ट्रेस करेंगे. x इक्वल टू 1. अच्छा, ये तो सबके लिए चल रहा है. सब रो में फर्स्ट में 1 1 आ रहा है. अभी सेकेंड एलिमेंट 0 होना चाहिए. -2 क्यों हो रहा है? What we are missing here? One zero alternate. X माइनस कर सकते हैं फॉर अल्टरनेट. यस, इफ एल्स कंडीशन डाल सकते हैं. सर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ना नेगेशन का साइन. क्या हुआ? नेगेशन के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा ना. नॉट ऑपरेटर कैसे होता है? इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है. यस, हाँ वही रहता है. तो ये यूज कर सकते हैं क्या? नॉट ऑफ, लेट्स ट्राई दिस. ये तो नॉट इक्वल टू आएगा. ये कुछ चेंज नहीं होगा. What's the exit operator? It's this only. Or let's, ये बोल रहे हैं ना आप? Yes, it is done. Yes. Yes. In C we use negation. Okay. In C++ we have this. Okay. Done. सिर्फ ये ऑपरेटर यूज करना था. एंड एवरी टाइम जब न्यू रो पे आता हूं आई सेट x इक्वल टू 1. अच्छा, और कुछ डाउट है? तो अपर ट्रायंगुलर कैसे आएगा? हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो? राइट एंगल मतलब गिव मी द पैटर्न. मतलब सर मतलब ऐसे सीरीज ऑफ पैटर्न है कि अभी ये लोअर ट्रायंगुलर है ना, तो एक अपर ट्रायंगुलर है, बाद में एक रेक्टेंगल है, उसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी रेक्टेंगल है, एक फील्ड रेक्टेंगल है. उतना कॉम्प्लिकेटेड तुम लोग को एग्जाम में नहीं देंगे. आपको है ना राइट एंगल दे देंगे. बट अभी कैसा सी डिफरेंट टाइप ऑफ राइट एंगल देंगे. अच्छा, नोट पैड कनेक्टेड है ना. यहाँ पे देखो, ये बोल रहे हो ना आप. सपोज ये मेरा स्क्रीन है, मतलब यहाँ से है, तो ऐसा भी दे सकते हैं. ये आता है आप लोग को? ये कैसे प्रिंट करेंगे? यस यस. अच्छा, ये वाला. तेजस इज आस्किंग फॉर दिस. यस. अच्छा, इसके लिए क्या लॉजिक लिखेंगे? पहले पेपर और पेन लेके ट्रेस कर लेते हैं. कोडिंग में टाइम चला जाएगा. सी, ये दोनों एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है? तो इसमें कैसा करो, जो भी पैटर्न दिया ना उसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दो. जो भी पैटर्न दिया आपको एक रिलेशन मिल जाएगा ऐसा करने पे. अच्छा, ये आता है क्या सबको? तो मैं डायरेक्टली इस पे जंप करूंगा.
ये हो जाएगा सबसे। स्पेस का लॉजिक पता है? यस, देयर इज आपको सिर्फ क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन नंबर ऑफ स्पेस एंड नंबर ऑफ रोज। मतलब फर्स्ट रो है तो कितना स्पेस है, सेकेंड रो है तो कितना स्पेस है, थर्ड रो है तो कितना स्पेस है। यू हैव टू जस्ट फाइंड द रिलेशन। आफ्टर प्रिंटिंग दैट मच नंबर ऑफ स्पेस यू विल प्रिंट स्टार इनसाइड इनर फॉर लूप। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है? Yes. Yes. You have to just find the relation between yes number of row। see देख ही लेते हैं चलो यार। see number of row फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के लिए कितना स्पेस है? 3 स्पेस है। ओके, सेकेंड रो के लिए कितना स्पेस है? 2 यस, सेकेंड रो के लिए 2 स्पेस है। थर्ड रो के लिए 1 1. रिलेशन मिल रहा है कुछ? ऐसे रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या रिलेशन मिल रहा है? सबका ये एडिशन 4 है। ये आई है और एडिशन क्या है? 4 है। यस, दैट इज आल्सो ट्रू। हाँ, वो भी रिलेशन रख सकते हो, वरना मैं जो रिलेशन यूज करता हूँ, यस, यूजुअली वी टेक इनपुट n फ्रॉम यूजर टू आस्क द नंबर ऑफ रोज। ये पता होगा आपको कि हम लोग n लेते हैं नंबर ऑफ रोज पूछने के लिए। तो लेट मी जनरलाइज दिस n। ठीक है, तो ये i है, दैट इज रो i इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो n माइनस i स्पेस प्रिंट हो रहा है, वेर n इज टोटल नंबर ऑफ रोज। जैसे अभी तेजस ने एग्जांपल में बोला था 3, वहां पे हमने n इक्वल टू डायरेक्टली 3 लिया था। यहाँ पे वी आर सेटिंग इट टू n, मतलब यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो उसे पूछ रहे हैं कितना रोज प्रिंट करना है। तो दैट इज n माइनस i, n माइनस i स्पेस विल गेट प्रिंटेड, स्पेस n माइनस i स्पेसेस। अभी ट्रेस करते हैं, i इक्वल टू 1 फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के लिए कितना? n माइनस 1, दैट इज यहाँ पे n क्या है? 4। यस, तो 4 माइनस 1 स्पेस है, 1 2 3, दैट इज 3। यस, 4 माइनस 2 स्पेस है i इक्वल टू 2 के लिए, 4 माइनस 3 स्पेस है i इक्वल टू 3 के लिए। दैट इज द रिलेशन। Yes. तो इनर फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे हम लोग? इफ j is less than or equal to this number, I will print space, and j इससे बड़ा हो जाता है, then I will start printing star। समझ रहा है? Yes, sir. Yes. क्लियर है पिक्चर? सिर्फ रिलेशन समझना है, कुछ नहीं है। ऐसे रोज एंड कॉलम बना के रिलेशन, अभी ऐसा जरूरी नहीं है, आपको एग्जाम में कुछ भी पैटर्न दे सकते हैं, 1-0 के बजाय अल्फाबेट भी रख देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रिंट क्या हो रहा है वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैटर्न क्या बन रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड स्पेस एंड जो भी प्रिंट कर रहा है उसमें मतलब रोज के हिसाब से, रोज के रिलेशन में हमको एक मतलब कंडीशन फाइंड करना होगा। जैसे मैंने ये फाइंड किया कंडीशन, आपको सिर्फ एक कंडीशन फाइंड करना है, दैट्स इट। और आपको बोर्ड एग्जाम्स में इतना डिफिकल्ट पैटर्न नहीं देगा, मैक्स टू मैक्स 1-0 देगा और इसमें देगा मैक्स टू मैक्स। हम लोग देख लेते हैं वो वाला चीज, 1-0 इसके लिए। ठीक है, तो सेम लॉजिक ट्रायंगल कर भी आता है इसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो। राइट एंगल, आप पिरामिड का बात कर रहे हो राइट? यस। हाँ, उसमें सी पिरामिड में कैसा होगा, स्पेस यहाँ पे देखो, पिरामिड मतलब ऐसा होगा, यस 2 स्टार होगा। सर उधर नंबर्स दिए मतलब अलग पैटर्न में दिया है। नंबर्स, ओके, नंबर्स तो ठीक है ना। नंबर्स हम लोग इफ एल्स करके, अभी निगेशन हम लोग ने करके कैसे, मतलब वंस वी गेट द पैटर्न, उसके अंदर हम लोग इफ एल्स करके, वो लॉजिक बहुत इजी है। वंस आपको पैटर्न मिल जाता है, उसके बाद में हम लोग 1-0 पे जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि पैटर्न कैसे अचीव करेंगे पिरामिड का। ओके, सो यहाँ पे वापस ट्रायंगल जैसे दिए, क्या पास्कल्स ट्रायंगल जैसे दिए, कौन सा? यही वो मतलब 1-0 1-0 है ना,
हाँ वो पास्कल ट्रायंगल का भी है मतलब। अच्छा मेरे को दे ही दो, हम लोग वही करते हैं, चलो यही ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यस, और बाद में क्या है 1 0, कैन यू गिव मी द पैटर्न, सेकेंड रो में कितना डिजिट्स है? सर मेरा वाला मेरा अलग पैटर्न है। हाँ गिव एनी पैटर्न, एक पैटर्न डिस्कस करते हैं हम लोग। सेकेंड रो में 1 1, सेकेंड रो में 1 1, ओके 1 1 ऐसा ही है। हाँ, और फिर नीचे 1 2 1, 1 2 1, ओके फिर नीचे 1 3 3 1, 1 फिर उसके नीचे 1 4 6 4 1। यहाँ पे क्या था 1 3 3 1, 1 3 3 1, हाँ, नेक्स्ट 1 4 6 4 1, यस। अभी बताओगे मुझे इसके लिए लॉजिक, हमें स्पेस का लॉजिक देखा हमने, स्पेस के लिए कैसे करते हैं वर्क, यस रिलेशन बिटवीन, यस अभी पहले ये रिलेशन फाइंड करते थे कि फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट प्रिंट हो रहा है 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, फिफ्थ रो में 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है। अभी पहले तो रोज एंड कॉलम बना लेते हैं, यस ये फर्स्ट होगा, यस एक्चुअली इसमें ड्रॉ नहीं कर पाऊँ ना, तो 1 and 4 नीचे होगा एक्जैक्टली, एंड ओके लेट्स राइट डाउन द लॉजिक फर्स्ट। सी कितना स्पेस होगा फर्स्ट रो में बिफोर 1, कितना स्पेस होगा वो कैसे पता चलेगा 1 2 3 4, यस स्पेस कितना होगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ स्केल राइट नाउ विद मी, तो ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन। 8 स्पेस होगा। कितना स्पेस होगा? 8 कैसे 8? कॉलम मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 9 है ना, तो ऊपर एक ऑक्यूपाई किए 1 ने, तो 8 स्पेस होगा। ये वाला सी कभी भी है ना, ये वाले पैटर्न में ना जो प्रिंट कर रहे हो उसके बाद कुछ मैटर नहीं कर रहा है, उसके बाद कुछ भी रहने दो, दैट डजंट मैटर। एक बार आपका ये प्रिंट हो गया उसके बाद यू विल नॉट बदर, बट उसके पहले कितना स्पेस है हम लोग ने 4 उसमें भी स्पेस वही 4, किया ना, यस 4 स्पेस है, कुछ रिलेशन मिल रहा है। सी फर्स्ट रो के लिए कितना स्पेस है, फर्स्ट रो के लिए कितना स्पेस है 4, सेकेंड रो के लिए कितना स्पेस है 3, 3 थर्ड रो के लिए 2 2, रिलेशन मिल रहा है, यस। क्या रिलेशन है? ये आई है और इसको एन ले लो, नंबर ऑफ कॉलम n minus i, आई करने का। एन माइनस आई क्या स्पेस, स्पेस, यस एन माइनस आई स्पेस प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अभी एन माइनस आई स्पेस प्रिंट करने के बाद मुझे ये भी चीज प्रिंट करना है सर, 1 फर्स्ट में 1 है, 1 1 है, अच्छा इसके पीछे स्पेस है क्या, व्हाट इज दिस, यस स्पेस है ये सर। स्पेस है उसमें। स्पेस है, ओके तो अभी हर एक डिजिट वो तो आई थिंक प्रिंट है, सी आउट के अंदर वो लोग ने किया होगा, सी आउट के अंदर ऐसे लिखा होगा ना, जो भी नंबर प्रिंट करना है डबल कोट्स के अंदर स्पेस लिखा होगा एंड यस हाँ, ऐसे मैनिपुलेट किया है उससे वो। मैनिपुलेट किया होगा,
हाँ मैनिपुलेट किया। ओके, तो अभी हमने सिर्फ ये स्पेस अचीव कर लिया। अभी से हमें नंबर का लॉजिक समझना है कि कैसे हो रहा है एक्चुअली प्रिंट। नंबर में क्या लॉजिक है? फर्स्ट रो आई इक्वल टू, ओके, आई इक्वल टू 1 के लिए इट इज प्रिंटिंग 1। सेकेंड रो आई इक्वल टू 2 के लिए, अच्छा जे भी लिख, जे के लिए भी रिलेशन, जे इक्वल टू 1 के लिए इट इज प्रिंटिंग 1। यस, आई इक्वल टू 1, जे एक ही बार रन होगा, जे इज गोइंग फ्रॉम, ओके यहाँ पे तेजस ने भेजा है। ओके, नाउ हियर J. For first row, one thing is printed. Second row, two digits get printed. Third row के लिए 3 digits gets printed. क्या रिलेशन बन सकता है? I equal to 2 के लिए it is going 1 to, okay, brush clear है, 1 to 2 and again 1 हो जाता है। अच्छा, I equal to 3 के लिए 1 होता है, 3 होता है, then लास्ट में 1 हो जाता है। I going from 1 to 4, 6 हो रहा है, 4 हो रहा है। ओके, मतलब जितना डिजिट 3 डिजिट प्रिंट करना है, 3 डिजिट प्रिंट करना है, तो इट इज डूइंग 1 लास्ट, सी स्टार्ट एंड एंड में 1 1 है, स्टार्ट एंड एंड में 1 1 है। तो हम लोग को कुछ लॉजिक इनर फॉर लूप के अंदर भी लिखना है। यस, स्टार्ट एंड एंड 1 1 है, वो हम लोग आउटर फॉर लूप में मैनेज कर सकते हैं। सर पैलिंड्रोम नंबर का लॉजिक लगेगा मुझे। पैलिंड्रोम नंबर 1 + 1 2, बट अगेन वो रिपीट हो रहा है ना। पैलिंड्रोम नंबर किसे बोलते हैं? उल्टा नहीं तो सीधा, दोनों में सेम दिखता है। या बट प्रिंट करने के लिए कैसे लॉजिक यूज करोगे आप पैलिंड्रोम के लिए? बिकॉज पैलिंड्रोम नंबर कैसा होता है कि वी गेट अ नंबर एंड वी हैव टू चेक वेदर इट्स पैलिंड्रोम और नॉट, राइट? यस, हम लोग उसे चेक करते हैं, बट यहाँ पे तो रैंडमली होगा। अभी 5th रो जाएगा तो बहुत बड़ा नंबर पैलिंड्रोम नंबर होगा, तो वी कांट यूज दैट लॉजिक। ऑफ कोर्स उसके अंदर से कुछ पार्ट उठा सकते हैं। सी आई इज 1, this is new for me also, okay? मैंने मतलब बहुत टाइम पहले किया होगा ये सम सॉर्ट, तो ये याद नहीं होता है। कुछ भी चीज याद मत करना पैटर्न्स में, बिकॉज कुछ याद नहीं रहता है। आपको डिराइव करना है जगह पे। पहले पेन और पेपर से लेके ड्रॉ करके रिलेशन फाइंड करो, देन स्टार्ट राइटिंग अ कोड। अच्छा, एग्जाम में कोड पूछता है इसके लिए? यस, 10 मार्क का कोड आता है। 10 मार्क का आता है, ओके। यस। Okay. Yes. 1 2 1, 1 से 2 जा रहा है, for i equal to 2, for i equal to 3, 1 से 3 जा रहा है, for i equal to 4, 1 से 4 जा रहा है, and then 6 हो रहा है। Yes, I can do like this। आउटर फॉर लूप के अंदर i को 1 से, मतलब x जो भी है, x को 1 सेट किया, एंड इनर फॉर लूप के अंदर I will set x to I, that is row number, then क्या करूंगा? इंक्रीमेंट, yes, but it gets incremented by 2। ओके, मैं इसका आंसर लॉजिक के साथ भिजवा देता हूँ। ये मुझे कोड बैठ के करना पड़ेगा, आई नीड टू कोड, ठीक है? ये पैटर्न के लिए मैं सर आंसर ऐसा आएगा क्या कि सबसे पहला फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, बाद में इनर लूप में वो j इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज किया और j इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस i किया और j माइनस माइनस किया, बाद में अंदर जब तक वो ट्रू रहेगा तब तक एम्प्टी स्पेस प्रिंट करने का और जब फॉल्स होगा तब बाहर 1 प्रिंट करने का। कोड करके दिखाओगे तो आई विल अंडरस्टैंड। मतलब
कुछ लॉजिक होगा, सोचना पड़ेगा मुझे भी, ठीक है। 1 से 4 जा रहा है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड, ये सम हो रहा है 1 + 2 3 + 3 3 + 1 2। ओके, आई विल लेट यू नो। इसका आंसर है ना, मैं भिजवा दूंगा सर के पास। ओके, यस मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ फोटो भिजवा दूंगा। राइट नाउ आई हैव अनदर लेक्चर, सो आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, यही है ना, और कुछ डाउट है? ये क्वेश्चन को छोड़ के कुछ क्वेश्चन देना है पैटर्न में, यही समझा मेरे को। 1 1 2 1। ओके ओके, और कोई पैटर्न है? 1 4 6 4 1। ओके, याद रहेगा। वो अपर ट्रायंगुलर वाला। अपर ट्राइंगुलर वो जो किया था, अरे हाँ वो तो कर लिया ना हमने। अभी उसमें लॉजिक क्या है? सेम लॉजिक है ना, मतलब उसके अंदर भी। हाँ, हाँ अभी सर, हाँ। स्पेस का समझा आपको? स्पेस Yes. कैसे करना है, स्पेस को कैसे हैंडल करना है, वो आ गया, फिर खत्म हो गया काम, कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपने Yes, चैट yes. बॉक्स में डाला है क्या वो? No. अपर ट्राइंगुलर वाला बोल रहे हो? यस, एक है ना जो पहले देता उसका उल्टा पूरा 1 0 1 0 1 ऐसे 1। यस, स्पेस का लॉजिक समझ लो, हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आगे का स्पेस कंसिडर करना होता है, पैटर्न को प्रिंट करने के पीछे वाला स्पेस कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। ओके, आगे के स्पेस के लिए यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ रो एंड स्पेस। ओके, Yes. बाद में पैटर्न तो इफ एल्स से हैंडल कर सकते हो, जो भी है 1 0 1 0। ओके, थैंक यू देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई विल जस्ट रिप्लाई फॉर दिस आंसर क्वेश्चन जो भी पैटर्न दिया आपने। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। You all can leave. Yes.